वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड एज ऑलवेज फर्स्ट लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर्स। सो आज हम लोग देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि निफ्टी 16,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है। दैट्स ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, स्पेशली जब हम देखते हैं दैट इंट्राडे इट एक्चुअली created a low of 15,671 and then after that it's gone up almost 400 points. So काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है ये, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है कि ये हुआ है फॉर बुल्स। ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ रिलीफ दैट वाज गिवन टू द बुल्स। बट एग्जैक्टली देखते हैं मार्केट ओवरऑल प्लेस्ड कैसे है। सो अगर हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देखते हैं, व्हाट वी गैदर इज दैट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड निफ्टी अ लिटिल बिट। हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स अराउंड 1.5 1.2% ऊपर है, whereas Nifty is up by less than 1%। हम लोग वो भी देख सकते हैं, इंडिया विक्स इज डाउन टुडे। ऑब्वियसली ये ईओडी फिगर्स है, हम लोग बात करेंगे इंट्राडे का प्रोग्रेशन कैसा एग्जैक्टली था। सेक्टर्स की बात करें देन सेक्टर्स में वी कैन सी इट्स अ मिक्स्ड बैग ओवरऑल, ऑब्वियसली फेवरिंग द बुल्स। आज का जो दिन था, especially in the second half, it really ended up favoring the bulls a lot more compared to what we've seen in the past. In fact, हम लोग ने पहले देखा है उसे, जो छोटा सा ऊपर वाला मूव देखते हैं, रिलीफ रैली सा देखते हैं हम लोग सेकंड हाफ में, उसको अगर स्टेरॉइड्स चढ़ा देते तो वैसा कुछ हुआ है आज, आई फील। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग टुडे। इन टर्म्स ऑफ गेनर्स और लूजर्स हम लोग देख सकते हैं आईओसी, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, ऑल ऑफ दीज आर द टॉप गेनर्स फॉर टुडे फॉर निफ्टी। अगेन हम लोग ये लिस्ट देख सकते हैं, मेनी varied stocks. For example, IOC, oil and gas, we've got Sun Pharma, pharma company, Tata Consumer, consumer goods company. So काफ़ी varied है, it's a mixed bag as I said. अगर हम लोग लूजर्स की बात करें, वंस अगेन इट्स अ मिक्स्ड बैग, बट एक कॉमन थीम दिखता आ रहा है यहाँ पर। वी कैन सी अ लॉट ऑफ स्टील कंपनीज हियर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड सो ऑन। सो हिंडाल्को, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। सो कुछ वैसा देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू रिकॉल, स्टील कंपनीज वर नॉट डूइंग दैट बैड, इसलिए आज मार्केट ऊपर गया है। देन मे बी दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। सो वो एक देख सकते हैं हम लोग। इन टर्म्स ऑफ व्हाट एक्चुअली इम्पैक्टेड निफ्टी, अगेन बेयर विथ मी, वील टॉक अबाउट द चार्ट्स इन जस्ट अ मिनट। हम लोग देख सकते हैं कि इन्फोसिस वाज द बेस्ट परफॉर्मर फॉर निफ्टी, फॉलोड बाय टीसीएस। सो क्लियरली आईटी कंपनीज ने काफी अच्छा एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दिया है निफ्टी को, एंड एज अ रिजल्ट वी आर सीइंग निफ्टी above 16,000। एंड फाइनली दीज आर द लूजर्स, नॉट वेरी मैनी। इनफैक्ट जो लूजर्स है वो उतने सिग्निफिकेंट कंपनीज नहीं है, इट्स जस्ट कि 4-5% नीचे गए थे, वो कारण से दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द चार्ट। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं that this zone that we discussed is actually where Nifty has found a good amount of support. तो हम लोग ने बात की थी कि how this region might be an important one, and then finally एक low बनाया, उसके बाद finally we were able to see some buying. So zooming in, looking at the intraday chart, अगर हम लोग देखते हैं, we can see that it was still a gap down, थोड़ा सा ऊपर गया, एंड देन सेम जोन अराउंड 600 के नीचे से ही उसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, एंड एज अ रिजल्ट वी सॉ प्राइसेस जस्ट स्लिपिंग डाउन। नया लो क्रिएट हुआ। नाउ एटलीस्ट अप अंटिल दिस पॉइंट ऐसा लग रहा था दैट ओके मे बी साइडवेज जाएगा, मे बी एक क्या बोलते हैं 15,800 के आसपास का वो एक रेजिस्टेंस लेगा, एंड देन इट माइट जस्ट कॉल इट अ डे स्टेइंग अराउंड देयर। बट नहीं, वैसा नहीं हुआ। एज द डे प्रोग्रेस्ड, अराउंड फुटसी के ओपन के आसपास थोड़ा सा मार्केट हेजिटेट कर रहा था। यू कुड मेक आउट की नर्वसनेस था, विक्स वाज आल्सो लिटिल इन्फ्लेटेड, एंड देन आफ्टर दैट वंस द नर्वसनेस सेटल्ड, उसके बाद मार्केट भी ऊपर चला गया, एंड वी सॉ यूफोरिक राइज। आई से यूफोरिक बिकॉज इवन दो उतना बड़ा गया नहीं है, लाइक इट वाज अ गुड रिकवरी। इफ आई शो यू, अगर हम लोग लो से पकड़ते हैं, देन इट वाज अ गुड रिकवरी ऑफ अराउंड 360 पॉइंट्स। बट जो यूफोरिया था, आई फील दैट वाज वेरी हाई, बिकॉज आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट मैनी वुड बी थिंकिंग कि शायद ऐसे हम लोग रिकवरी देखें, बिकॉज मैनी पीपल माइट बी ट्यून्ड इनटू थिंकिंग कि ठीक है सेल ऑन राइज का मूव आ गया, एंड देन दैट्स अबाउट इट। बट इट इज मूव्स लाइक दिस दैट एक्चुअली ट्रैप मोस्ट पीपल, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सेल ऑन राइज का व्यू रख के यहाँ पे शॉर्ट करता है, यू आर ऑलरेडी कॉट ऑफ गार्ड, and within half an hour or so your position would have been completely stopped out. So again, it's very important to stay in check on such days. So हम लोग ने पहले भी बात की थी कि for all the traders including myself, it's very important कि हमारे biases कहाँ पर होते हैं वो चेक करने, और कौन से biases हमारे consciously apply करने हैं वो ध्यान में रखना होता है. So again, all of that I feel is in play here. अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की,
I'll just show you Bank Nifty as well. This is what it looks like. Very similar हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल ये वाला जो लेवल था, राइट, द 7th March लेवल, उसी के अंदर आ गए हैं हम, एंड दिस इज वेयर द एनएसई ग्लिच वाज देयर, सो आई फील वी कांट रियली कंसिडर दिस प्राइस मूवमेंट टू बी वैलिड. बट अगेन वो ग्लिच के जोन के अंदर आ गया है, सो अगेन इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल क्लाइम. आई थिंक द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर इज कि क्या ये वन हिट वंडर था, क्या ये वन सनी डे डज नॉट मेक समर टाइप का सिचुएशन था, क्या एग्जैक्टली था. आई थिंक वील गेट टू नो possibly by the end of this week, क्योंकि अगर वीक एंड तक लेट्स से इट इज एबल टू रिटेन दिस लो, सो बैंक निफ्टी का ये जो 32,173 एंड निफ्टी का जो अराउंड कितना था हम लोग ने देखा था, निफ्टी का जो अराउंड 671 का लो है, अगर वो रिटेन कर सकता है देन क्लियरली इट विल शो दैट इट इज ट्राइंग टू फेवर द बुल्स. सो लेट्स सी. आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा in terms of sentiments as well. So I think I would prefer waiting for that. ऑलरेडी जिन्होंने बाइंग ऑन डिप्स टाइप का कर लिया था, लेट्स से समवेयर हियर, लेट्स से समवेयर हियर, दे माइट बी थैंकिंग देयर डिसीजन, बिकॉज मेनी पीपल aren't always able to buy the least, like जो lowest point है वो, and that's fine as long as you're accumulating. There's a concept in finance called dollar cost averaging. अगर उसको थोड़े माइक्रो स्केल पे ले ले तो जब भी ऐसा कुछ डिप होता है, इट माइट बी prudent to actually buy a little bit, क्योंकि उसमें आपका टाइमिंग रिस्क निकल जाता है. यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, देन इट already automatically gives you a good lower buy average. So again, that's just a topic and a concept that's there. ये वाला जो रेजिस्टेंस था वही फिलहाल सपोर्ट बना लगता है फॉर रिलायंस. वी कैन सी दैट सीम्स टू बी द केस हियर. इनफैक्ट अगर आज का लो देखते हैं, वी सी इट रीटेस्टिंग 2200 एज वेल. सो लेट्स सी कैसे शेप अप करता है, इफ इट्स एक्चुअली एबल टू होल्ड 2200 एज वी सेड. आई थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, आई थिंक इट्स मोर अबाउट होल्डिंग दिस लो दैन अबाउट क्रिएटिंग न्यू हाइज, क्योंकि जब भी ऐसा ओवरसोल्ड हो जाता है, even a flat movement can reflect that market has cooled down और उसके बाद वो नीचे जा रहा है ऊपर. that dictates the further move. again, कल ही हम लोग ने RSI 30 एंड सो ऑन की बात की थी. HDFC बैंक की बात करें, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अगेन, इट डज नॉट लुक दैट रीअश्योरिंग, स्पेशली क्योंकि काफी कंसिडरेबल गैप डाउन था, but we can see it is able to hold above yesterday's high, which is I think a very important sign on its own. हम लोग देख सकते हैं 1300 को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है. And even though ये higher levels, that we were used to 1600 and such के 300 point नीचे, I think it still is an important feat. Next up, Infosys 1744 level को आराम से तोड़ दिया है. Now facing resistance somewhere around here, 1800 साइक. ये हम लोग ने पहले भी ये सारे लेवल्स देखे हैं. सो आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू सी कि क्या ये वाले जो लेवल्स हैं, ऊपर वाले लेवल्स तोड़ पाएगा कि नहीं, बिकॉज अनलेस दैट हैपन्स, I feel buying around these levels 1660, 1670 के आसपास is more advisable. Again, advisable from my educational point of view, क्योंकि I'm not SEBI registered, so I wouldn't want to give any recommendations or advice. But I feel it is more beneficial ऐसे levels पे buy करने से compared with breakouts, क्योंकि अगर यहाँ पे breakout ले and then just a few points later it sort of takes resistance and then goes down, then it sort of defeats the purpose of a breakout trade, right? So that would be my view for Infi. TCS में again a very good move. TCS का I feel the situation is a little different because I believe कल वो लोग का buyback open हो रहा है. So maybe we can see some interesting moves after that opens and during that as well. HDFC की अगर बात करें, then HDFC we can see just yesterday हम लोग ने बात की थी कि maybe which was the level. I'll just zoom out. We were talking about, I believe. Okay, it's not giving me that Purana wala data. So I'm actually on mobile data right now. So maybe because of that, it's sort of facing some issues. But either way, हम लोग देख सकते हैं कि वो 2200 भी retest हो गया था. इनफैक्ट अगर आज का लो देखते हैं, 2100 भी retest हो गया था. But finally, it's able to hold about 2150. So let's see if it actually holds. अगर ये एक बॉटम जैसा, बेस जैसा बना देता है, दैट वुड बी अ गुड साइन. Next up, we look at ICICI Bank. Internet seems to be slowing down now, unfortunately. In the meanwhile, I'll just say that I was very shocked and I was very surprised and happy today to see कि हमारा कल का video was actually part of Trading Views editors picks. So
really made my day when I got the message. And it's great to finally see our videos on editors picks. So I hope वो ज़्यादा often होता रहता है. I'm not sure why we are not really getting ICICI Bank and the stocks that follow it, but overall I think the situation is looking very similar. One of the most important ones I think is Axis Bank, क्योंकि वो कल जो जोन मार्क किया था वहीं से आज लो बना के बाउंस अप किया है. So that is a stock that I would personally look at as well, along with the others. So let's see if this rally continues and if it's able to really give the relief to the bulls as it might and as it can, or if it's more of a one hit wonder type of day. So very curious to hear your thoughts as well. As always, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.